Okay, good afternoon to you all. I welcome you to today's lecture. We started our polity preparation on the UPSC CSE exam platform. We started with discussing about the constitutional history of political constitutions, our political Indian constitutions. Then again we move to the next topic, that is the how we discuss the federalism of our constitution. Then again we move to the next topic, that is the constitutional amendment and the basic structure related doctrine with our constitution. Then again, the last time what we have discussed is the polity related aspects, and now in this lecture we will focus on the governor, the institution of governor, how the institution of governor has been evolved during our constitutional history, and how this office is considered as a very controversial as well as the very important linchpin of our constitutional federalism. Okay, so we'll okay, आवाज आ रही है ना मेरी? If you have any doubt, okay. So I welcome you all to today's lecture. We'll start our discussion. The first of all, Unacademy is providing India's one of the largest learning platform to crack the UPSC civil services. It will help you to tackle through the three main stages of civil services, that is the prelims, then again the mains, and also the interview also. So it provides the daily live classes, then again it provides the live test series, it provides the daily question quizzes, and again the structured courses. Structured courses means the directly related with the specific aspect of your preparation, that is मेंस के हिसाब से चलो या प्रीलिम्स के हिसाब से चलो. Again the structured courses will focus mainly on the answer writing requirement of our examination. Then again the specific essay writing, ethics में कैसे questions लिखने हैं तो उसके हिसाब से structured किए गए courses. तो Unacademy is providing the unlimited access to your knowledge. Again you can download the Unacademy learning app that will help you to get your access to the Unacademy knowledge base, right? Okay, before that I will introduce myself. I'm Aniket. I gave the 5 mains of civil services, appeared in the 2 interviews also. Sorry, I have a postgraduate in biotechnology, post-graduation in the biotechnology. I have a 2 years of TBT JRF fellowship also, and more than 3 years of experience in teaching or guiding the UPSC civil service aspirants on the different fields, जैसे कि Pune institutes and then Delhi institute also. If you have any doubt, please ask me. You can join my this Telegram channel also, or you can text me directly, right? So there are a number of top educators on the Unacademy platform who are guiding the number of aspirants through their different phases. जैसे कि 16,000 courses Unacademy is providing right now. जैसे कि पॉलिटी के कोर्सेज चल रहे हैं, देन हिस्ट्री रिलेटेड कोर्सेज, देन एनवायरमेंटल के कोर्सेज, देन अगेन द आर्ट एंड कल्चर कोर्सेज, आंसर राइटिंग के भी कोर्सेज चल रहे हैं, देन एनसीईआरटी रिलेटेड समरी के भी कोर्सेज चल रहे हैं. तो यू कैन गेट योर सब्सक्रिप्शन. So there is a flexibility, like you can get your subscription for 1 month also, or you can get your subscription for 6 month or 1 year period. So उसके हिसाब से आपको डिस्क्रिप्शन में ये मिल जाएगा, कंसेशन मिल जाएगा. So Unacademy is providing the plus courses as well as the iconic courses. Plus courses will be the normal courses जैसे कि टेस्ट सीरीज वगैरह. तो if you want to join the plus courses, you just use my code, that is referral code, that is the Aniket. So you will get a 10% of discount in your fees. Again the iconic courses, which is more of a personalized learning course, जैसे कि आपको mentor appoint किया जाएगा, so that will help you to guide through the different phases. Okay, so iconic courses की अगर सब्सक्राइब करना चाहते हो तो भी आप मेरा Unacademy का अनिकेत की रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट? सो विल स्टार्ट. Hi, good morning, good afternoon all of you. Okay, so we'll start today's lecture with general. We'll start today's lecture as the importance of governor as an institution in the federal polity, right? So as we all know, India is a federal country, as we have all discussed. Means the power is get distributed within center and the state, right? Okay, the central executive head, here we can say that the central executive head is a president. So the parallel institution to the president at the state level is
governor, right? So as we can say that the parallel institution, as we compare our state government with the center, governor shows parallel powers or parallel nature of its powers with respect to the president की जैसी हैसियत है सेंटर में, the same constitutional post और कॉन्स्टिट्यूशनल का जो अहूदा है, मुद्दा है, वो गवर्नर को दिया गया है. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. फेडरल स्ट्रक्चर में गवर्निंग जो स्टेट बॉडीज है सब एटॉमिक लेवल एज वेल एज द सेंट्रल लेवल, सो दैट दिस इज टू बी प्रोवाइडेड विद द नॉमिनल हेड, राइट? Nominal head, okay. And main functional authority lies with the council of ministers. So at the central level, nominal head is represented by the president, and at the state level, nominal head is represented in the institution of governance. If you have any doubt, please ask me. Okay, if you see the historical evolution as we will discuss in this history related topic. So as we can say that the historical as parliamentary democracy is influenced with the British Parliament, right? But at that time there was federal polities also. While making our constitution, there were some federal polities like USA's federal polity, then Canadian federal polity, and again Australia में भी federal polity होती है. So at that time we have a references to that particular federal polities. Federal structure यहाँ पे होता है. British में federal structure नहीं था, तो obviously the institution which started in the 1780s only, that earlier in the pre-independence era, British started with the provincial government. Okay, provincial government कैसा था? जैसे कि they started with the Madras, they started with the Bombay, and they started with the Kolkata, right? So these provinces, they were independent of each other in the earlier phases of British rule, right? British rule का जब हम हिस्ट्री देखें तो they started with the provincial level. provinces उन्होंने establish की थी, जैसे कि मद्रास की province थी, then बॉम्बे वाला province था, कोलकाता वाला province था. So these were independent of each other. Again in 1784, they subordinated this Madras and Bombay provision to the Kolkata, right? Okay, in 17. And again by the 1835 Act, the centralization has started. Means they subordinated these provinces, Madras की province लो या Bombay की province, so their provinces are subordinated in the Kolkata presidency. So these were called the presidencies. उन presidencies में subordinate कर दिया कोलकाता के, एक गवर्नर जनरल बना दिया for whole India. Okay, these are the centralizing. So we can say that सेंट्रलाइजेशन प्रोविंसेस की हो गई थी इन 1835 के एक्ट में. अगेन इन द एक्ट ऑफ 1861 द डिसेंट्रलाइजेशन हैज स्टार्टेड. मींस प्रोविंसेस को जो लेजिस्लेशन का अथॉरिटी था वो वापस दिया गया. ओके, बाय द वो जो 1835 वाला जो एक्ट था उसमें सेंट्रलाइजेशन किया था, लेकिन बाय द एक्ट ऑफ 1861 द डिसेंट्रलाइजेशन हैज स्टार्टेड एंड दिस डिसेंट्रलाइजेशन कंप्लीटेड बाय द 1935 एक्ट. ओके, तो कंप्लीट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, कंप्लीट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई प्रोविंसेस को. दीज प्रोविंसेस वेर केप्ट अंडर द गवर्नर, द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नर. ओके, तो पहले जो मद्रास
बॉम्बे और कोलकाता प्रेसिडेंसीज के जो हेड थे उनको गवर्नर कहा जाता था. वो अगेन द गवर्नर इंस्टीट्यूशन मेड सबॉर्डिनेट under the Governor General of India. Okay, and by the 1935 Act, these provinces were kept under the institution of governor, and which were responsible to the crown, and which were appointed by the crown only. So this is most important difference, right? On that time, the governor's institution was appointed by the crown in 1935 Act. And they were responsible to the crown only. So there was some autonomous status to the institution of governor. So this is the main history of our governor's institutions. Okay, if you have any doubt, you can ask me directly. Yes, bicameralism is also federal feature, right? Bicameralism is a central feature of separation of power and the federal feature. Like if you see the US Senate or if you see our Rajya Sabha, they are totally meant to present the interest of states. लाइक सेनेट में मेंबर जो होते हैं वो स्टेट का देयर स्टेट का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं. अगेन वी हैव राज्यसभा वेयर द विच इज कॉल्ड एज अ काउंसिल ऑफ स्टेट्स. द नेम ओनली सजेस्ट दैट इट इज अ फेडरल नेचर इंस्टीट्यूशन फॉर द फेडरल नेचर, राइट? ओके, तो एज वी स्टार्टेड हाउ द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नर हैज बीन इवॉल्व्ड. Okay, they started with the head of presidencies. Again they integrated within the federal structure. Federal structure में उनका integration हो गया. So as we have seen, the center में executive हो रहते हैं which is headed by the president. So state executive is given under Article 153 to Article 167 under the Part 6 of our Constitution. So state PCS के exam में this is most important. They can ask directly questions from that particular facts, right? So if you go to the nature of our institution of, if you understand the nature of institution of governor, we can say that it is parallel institution like president. At the president वाली जो institute है at the center, it is a parallel to that at the state level. State के executive को head करते हैं governor. Okay, like the center's executive is headed by the president, state executive is headed by the governor. Then again, the nature of office is a dual type of office. Dual role है यहाँ पे office का. Why? Because it is appointed by the president, as we will discuss in later words. Again, it acts as an agent of center. So it is a constitutional office. Why? Because it has given the separate constitutional existence under Article 153 and 154, right? So it is a constitutional office. Again, the nature of office is also the agent of center. Why? We will discuss that in the next lecture, why institution of governor is considered as an agent of center, right? Okay, so historical background में अगर हम देखें so we can say that as we have seen the history, at the time of independence, India's independence is drawn with the partition, right? Religion based partition हुआ था, and there were separatist tendencies.
like in the northeastern state, again in the south, again in Jammu and Kashmir, there were strong demand for a separation of secessionist movement were there. So obviously, but Constituent Assembly has thought that the governor institution of governor should be there to control the states. So the centralization is happened through the institution of governor. One of the feature which is criticized by the Western thinkers, that Indian federal polity is not typical federal structure because the institution of governor is there, because it is appointed by the center, it is removed by the center, and again it has some discretionary power भी है उनके पास. We will discuss in that particular next slides how the discretionary power is used by the governor. So the secessionist tendencies थी जो नेशनल इंटीग्रेशन को हार्म करना चाहती थी, उसके लिए ड्यू टू दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रेफर्ड द नॉमिनेटेड इंस्टीट्यूशन ऑफ पोस्ट ऑफ गवर्नर. नॉमिनेटेड पोस्ट को प्रेफर किया in the constituent assembly, but there were some voices for elected institution of governor. Why we have not gone for elected institution of governor like USA में क्या होता है कि governors का election होता है in the US federal nature. So that's why US's federalism is considered as a typical और symbol, मतलब वो जो preferred federalism होता है ना, जैसे कि एक नॉमिनल स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से अदर डिराइव्स होते हैं, तो यूएसएस फेडरलिज्म इज कंसिडर्ड एज अ परफेक्ट फेडरलिज्म, while our polity is considered as a quasi federalism. Why? Because of the role of governor, which is considered as an agent of center to make a control of center on the states, right? Why this has happened? Because of the historical background of our institution, our nation. Like we started with the British rule, then again the partition has happened, again due to the political nature of our polity. जैसे कि मल्टीलिंगुअल स्टेट था, मल्टी इथनिक स्टेट है, so obviously there were tendencies of secessionist tendencies, मतलब दूसरा स्टेट बनाने की जो टेंडेंसीज थी प्रोविंसेस में, उसको कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रिक्ट पावर हाउस होना स्टेट में बहुत जरूरी था, जो सेंटर का रोल सेंटर का जो ऑब्जेक्टिव है ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. So that's why the Constituent Assembly has preferred to go for a nominated post of governor rather than the elected governorship, right? कोई डाउट होगा तो आप you can ask me directly. Okay, so why Constituent Assembly has gone for a nominated governor rather than the elected government? Due to the historical necessities required by the newly independent nation for the national integration, right? So center का control होना बहुत जरूरी था. Why? Because there were some certain secessionist tendencies were there. Okay, this is the most important factor. Though there were some voices like के मुंशी थे, के मुंशी और बीजी खेर, who demanded for elected house of governor. Okay, but obviously Constituent Assembly has given more preference to the stability rather than the accountability at that time. So Constituent Assembly preferred for the nominated post of governors to maintain the central control on the states. ये important है, right? Then again we will discuss the function of federal polity. As we all know, the India's federalism is often criticized as a quasi-federal, that is not perfect federalism.
Okay, why? Because of the institution of governor, which is under which the governor act as an agent of center, and the discretionary power given to the governor and non-elected nature of governor. So what is the function of federal polity? The first function which has been evolved is that the communication center. Most important function governor does is to communicate the central's objective to the state government, right? सेंट्रल्स के जो ऑब्जेक्टिव है उसको स्टेट को कम्युनिकेट करने के लिए गवर्नर का इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है. देन अगेन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, राइट, the most important function of governor in the federal polity is the executive head of states, right? And the third most important function is that in our constitution is to act as an agent of center in the extraordinary circumstances. Why? So certain conditions has happened where the state government is not following the constitutional mandate, then the function of governor became most important to enforce the constitutional mandate within the state. ये important है to maintain the national integrity, right? So this is most important functions क्या है पॉलिटी, फेडरल पॉलिटी में गवर्नर के? टू एक्ट एज अ कम्युनिकेशन सेंटर के जैसे एक्ट करना, सेंट्रल्स के जो ऑब्जेक्टिव है वो स्टेट को बताना, राइट? दूसरे जो फंक्शन है एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, मीन्स द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन. अगेन द थर्ड फंक्शन इज टू एक्ट एज अ एजेंट ऑफ सेंटर का एक एजेंट के हिसाब से काम करना. वाई? इफ द एक्स्ट्रॉर्डिनरी condition arises when the state government is not following the constitutional mandate, then this function becomes very much important. Like suppose state is demanding the secession from the Indian Union. जैसे कि एक कंडीशन आ गई कि कोई स्टेट है वो जो सेंट्रल के जो यूनियन है वहां से बाहर निकलना चाहता है, तो ऑब्वियसली गवर्नर का जो पोस्ट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है विद इन दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन, राइट? कोई डाउट होगा तो वी कैन आस्क मी डायरेक्टली. ओके, सॉरी. Okay, the office of governor. So as we have discussed here how the post of governor has been evolved, historical evolution of governor's post. We started with the presidencies. Again, what is the nature of our governors, nature of institution of governor की जो institution है उसकी nature क्या है? As we have seen the dual nature, work as a constitutional head as well as the agent of center. Again, the third most important, but is its function within the federal polity, right? What is the function of governor, institution of governor within the federal polity? Though this is most important as we have seen in the last slide. Okay, so we'll move to the next topic, that is the office of governor. How the office of governor is assented, means office of governor, constitution's mandate to the office of governor. So we will describe it. We will describe first is the appointment procedure, how the appointment procedure is given under the constitution. Okay, the appointment procedure is described under the article 153 and article 154.
Okay, the appointment, how the governors has been appointed is described under the Article 153 and Article 154. Right. So governors are appointed by the president. Governors are appointed by the president. So this is most important. We don't have a elected governor. We have a nominated governor. As we compare with the USA के साथ अगर हम compare करें तो we have a nominated governor, right, which is appointed by the president. So this is most important if you compare the US and Indian federal polity, right? Again, the second most important is that, so due to the appointment by the president, it is a center's nominee, right? State don't play any role in the appointment of governors in the constitutional mandate of our India. Like, okay, again we have gone, Constituent Assembly has gone for a कनाडा का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उससे ये बोरो किया गया है अपॉइंटमेंट प्रोसीजर. So why we have not gone for a USA based elected, as we have discussed already, why we have gone for a nominated institution of governor. Okay, so this is most important. If you consider appointment procedure है वो completely dependent on the center will advise the president to whom they will appoint, and the appointment is done by the president. So this is most important. If we analyze, if you compare how the appointment is gone under other federal country, जैसे कि USA में वो elected है, while the Canadian जो governors है which were appointed by the governor general. So we have gone for a Canadian type of appointment procedure. We are not gone for a USA based appointment procedure. So president जो appoint करते हैं, that will came in as the center's nominee, right? So ये important चीज़ है, हमें ध्यान में रखना चलना है if you are understanding the appointment procedure of governor. Okay, so what is the condition of appointment? Conditions of appointment as given under the constitution. Constitution के अंदर एक conditions of appointment दी गई है, right? The first condition is given by, he has to be complete 35 years. The person who is going to appointed as a governor should complete the 35 years. Again, he should not be the member of any parliamentary body, any parliamentary houses. This is most important, whether it is a Lok Sabha or Rajya Sabha. लोक सभा और राज्य सभा के जो मेंबर्स है उनको अपॉइंट नहीं कर सकते. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट गिवन under the constitution. This is the most important preconditions which are given under the constitution, right? It should be more than 35 years of old. He should not be the any member of state, any member of parliamentary. ये जो houses है उनके कोई members को appoint नहीं कर सकते. Again, the next condition is given that he should not hold any office of profit. So this is most important condition given under the constitution, right? Constitution के अंदर एक condition डाली गई है that governor should not hold any office of profit. Office of profit को अगर हम explain करें तो कोई भी center और state की कोई post हो, the post either which is in the state और center के पास हो, which is not giving the beneficiary financial benefit जो सेंटर और स्टेट की पोस्ट हो वो फाइनेंशियल बेनिफिट देती हो कोई भी इंस्टीट्यूशंस को, तो उसे कहते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, राइट? सेंटर और स्टेट का कोई अगर इंस्टीट्यूशन हो या कोई अगर पोस्ट हो जो सेंटर का हो या स्टेट का जो फाइनेंशियल बेनिफिट देता हो तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं, राइट? सो दिस इज कंडीशन गिवन दैट the person which is going to be appointed as a governor should not hold any office of profit. So this is most important condition which is given. Again, the historical evolution of our federal polity.
फेडरल पॉलिटी का हिस्टोरिकल इवोल्यूशन अगर देखें तो 2 कन्वेंशंस डेवलप हुए हैं for the appointment of governor. There has been 2 conventions has been developed. First is that the person which is going to be appointed as a state's governor should not be the person from that particular state. अगर महाराष्ट्र का कोई महाराष्ट्र का गवर्नर आपको अपॉइंट करना हो तो वो जो पर्सन है वो महाराष्ट्र का नहीं होना चाहिए. ये एक कन्वेंशन यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ है, राइट. अगर कर्नाटका का हो तो द गवर्नर शुड नॉट बी फ्रॉम द कर्नाटका. ये कन्वेंशन डेवलप हुआ है. अगेन द सेकंड कन्वेंशन विच इज हैज बीन डेवलप्ड इज दैट प्रेसिडेंट शुड कंसल्ट विद दैट पर्टिकुलर स्टेट्स सीएम. जिस स्टेट में गवर्नर को अपॉइंट करना है उसके चीफ मिनिस्टर के साथ प्रेसिडेंट डिस्कस करता है अपॉइंटमेंट, किसको अपॉइंट करे, कहाँ पे अपॉइंट करे. तो दीज आर द कन्वेंशंस विच हैज बीन डेवलप्ड. So these are not the rules. You have to strictly memorize it that these are only conventions. This is not given under the constitution, right? So इनको follow किया जाएगा हमेशा, ये कोई guarantee नहीं है. So these convention obviously often has been rejected or neglected by the center. So this is not the convention given, it's not the legal basis conventions. उनको कोई लीगल बेसिस नहीं है, उसको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी नहीं है, तो ये सिर्फ डेवलप हुए हैं, राइट. ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड द अपॉइंटमेंट, हाउ द गवर्नर हैज बीन अपॉइंटेड, हाउ आर द कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स. कॉन्स्टिट्यूशनल जो कुछ प्री कंडीशंस दी गई है उसको हमने डिस्कस किया. देन वी विल मूव टू द टर्म ऑफ द ऑफिस. सो दिस इज अगेन द कॉन्स्टिट्यूशन doesn't provide, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फिक्स टेन्योर दिया नहीं है गवर्नर को. कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रोवाइडेड द फिक्स टेन्योर टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नर. ऑब्वियसली देयर हैज बीन सम कन्वेंशन डेवलप दैट द गवर्नर शुड बी फॉर 5 years, बट दिस इज नॉट गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई फिक्स टर्म्स दिया नहीं है. सो दिस इज मेजर डिफिशियंसी, मेजर ड्रॉबैक. ये मेजर ड्रॉबैक है टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नर. सो व्हाई द सेंट्रल एजेंट के तौर पे क्यों काम करता है गवर्नर? इफ यू सी द रीजन व्हाई गवर्नर एक्ट एज अ सेंट्रल एजेंट, बिकॉज देयर इज अ नो फिक्स टेन्योर. Again, the appointment is on the central nominee. So governor की पोस्ट एक central nominee की पोस्ट है. There is a no fixed tenure given to the term governor's office. That's why governor's institution has been criticized as the central agent. So this is most important and this is the controversial, very controversial है. कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रॉबैक्स अगर हम देखें गवर्नर के ऑफिस का तो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर में और टर्म ऑफ ऑफिस में आ जाता है. देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रॉबैक. ओके, सो उस कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रॉबैक को एज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर के कैसे नेक्स्ट टॉपिक में कैसे पुंछी कमीशन जो सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन में बनाई गई थी तो उसने इस ड्रॉबैक को हटाने के लिए क्या क्या रिकमेंडेशंस दी है. Right. So why office of governor is more controversial? Because of its appointment procedure which is given under the article 153 and it's the term of office. मतलब कोई fixed tenure दिया नहीं है constitutional office को. So that's why it is become a very controversial and very centralized institution in our federal polity. Right. कोई doubt हो तो you can ask me directly any doubt. Okay. So as we have seen how the constitutional drawbacks in the institution of governor, कैसे constitutional drawbacks है, right, in the appointment procedure and in the terms of office or tenure
which is why it is called as a agent of center. So this is a strictly borrowed by the on the Canadian जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इट इज बेस्ड ऑन द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो गवर्नर का जो ऑफिस था उस पर डिपेंड हो किया गया है, राइट. सो वी विल डिस्कस द व्हाट इज द पावर एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर. गवर्नर की जो कुछ पावर्स है और फंक्शंस है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, डिस्कस करते हैं यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे हम अगर देखें तो देर आर एग्जीक्यूटिव पावर्स, दिस इज द लेजिस्लेटिव पावर, राइट. सो एज वी ऑल नो दैट गवर्नर is a head of executive. Governor is a head of executive at the state. Governor is a head of executive at state which is represented by the council of minister. council of minister जो executive को represent करती है, उनके head कौन है? governor. तो this is most important. So any function or any decision done by the council of ministry is implemented under the institution of governor. गवर्नर के नेम के अंडर उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है और उनका जो है फंक्शनिंग होता है. सो ए गवर्नर इज कंसिडर्ड एज अ हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट. जैसे कि प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इज कंसिडर्ड एज अ हेड ऑफ सेंटर एग्जीक्यूटिव, वैसे ही जो स्टेट का एग्जीक्यूटिव है उसके हेड कौन है? दैट इज द गवर्नर. उनके नाम पे अंडर हिज नेम एग्जीक्यूटिव वर्क करता है. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट. ऑल एक्शंस एंड फंक्शंस डन बाय द एग्जीक्यूटिव इज अंडर हिज नेम. द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव power which is given to the governor is that the allocation of business to the state executive. state executive के business allocation कौन करता है? गवर्नर करता है. मतलब जो स्टेट मिनिस्ट्रीज होती है उसको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर करते हैं. और उनका जो डिपार्टमेंट है, जैसे कि होम मिनिस्ट्री किसको देनी है, देन फाइनेंस मिनिस्ट्री किसको देनी है, दिस टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट्स इज allocation of business is done by the governor. Okay, the main function is that he appoints the executive, he heads the executive, and he distributes the business along the executive. So this is most important, three functions done under the executive power of governor, right. Again कुछ जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है, जैसे कि जो ट्राइबल मिनिस्टर को अपॉइंट करना है स्पेसिफिक स्टेट में, ट्राइबल मिनिस्टर्स विच इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर अंडर, जैसे कि उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया. सो दीज स्टेट हैव अ ट्राइबल पॉपुलेशन. सो इन दिस स्टेट पर्टिकुलर ट्राइबल मिनिस्ट्री हैज टू बी देयर. सो दिस इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर. अगेन जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनको भी गवर्नर अपॉइंट करता है. अगेन जो अटॉर्नी जनरल है स्टेट का उनको भी गवर्नर अपॉइंट करता है. अगेन द हेड एंड मेंबर ऑफ स्टेट पीसीएस के जो हेड है और मेंबर्स है उनको भी गवर्नर ही अपॉइंट करता है. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव फंक्शंस परफॉर्म बाय द गवर्नर एट द स्टेट लेवल. स्टेट के जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है, वो स्टेट के जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो कैसे गवर्नर्स के पास होती है और उसके अंदर गवर्नर कैसे काम करता है ये हमने देखा. फर्स्टली ही अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. देन बिजनेस है, किसको कौन सी मिनिस्ट्री देनी है वो उसका एलोकेशंस विच इज डन बाय द गवर्नर. अगेन ही अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल. देन ही अपॉइंट्स द ट्राइबल मिनिस्टर. Then he appoints the head of state PCS. So this is most important executive functions done by the governor, right. Again we can form the parallel
फंक्शंस विद द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट भी बहुत सारे जो अपॉइंटमेंट्स करते हैं वो भी एग्जीक्यूटिव पावर के आते हैं। उसी तरह से स्टेट लेवल पे एग्जीक्यूटिव पावर इज विद इन द हैंड्स ऑफ गवर्नर, उसके हिसाब से वो वर्क करते हैं, राइट। सो अगेन we will move to the legislative powers. The legislative powers, as we all know, legislature has a function of making laws, right? So laws which has been passed by the assembly, state assembly, और जिनके पास state legislative council होगी, कुछ स्टेट के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है और हर एक स्टेट के पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उनकी जो लॉ पास करते हैं उनको फाइनल असेंट देना ये गवर्नर का काम है। उसके बाद ही वो जो बिल है वो एक्ट में बदल जाएगा। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फाइनल असेंट हैज टू बी गिवन बाय द गवर्नर टू मेक अ लॉ इन द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर में लॉ कब बनता है? जब गवर्नर है जो फाइनल असेंट देता है, तो दैट विल मेक द बिल दैट पर्टिकुलर लॉ। ओके, सो दिस केम अंडर द लेजिस्लेटिव पावर। अगेन व्हाट आर द लेजिस्लेटिव पावर्स? द फर्स्ट लेजिस्लेटिव पावर इज दैट टू summon the state assembly session. So this is most important, and to prorogue द स्टेट असेंबली सेशंस। प्रोरॉग मतलब वो जो सेशन है, सेशन की सेटिंग है, उसको खारिज करना मतलब उसको कंप्लीट करना, उसे प्रोरॉग कहते हैं। तो दिस इज डन बाय द समनिंग ऑफ स्टेट असेंबली एंड प्रोरोगेशन ऑफ स्टेट असेंबली डन बाय द गवर्नर। सो दिस पावर इज ऑल्सो केम अंडर द लेजिस्लेटिव पावर, राइट। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर इज दैट द passing of bill, as we have discussed। जो स्टेट असेंबली हो गई और स्टेट काउंसिल ने जो बिल पास किया हुआ है उसको फाइनल असेंट प्रोवाइड करते हैं गवर्नर। सो दिस इज अगेन द पैरेलल पावर एज बेस्ड ऑन द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की जो पैरेलल पावर है वो गवर्नर के पास भी है, ये हमें यहां से मिल जाता है, राइट। But if you compare the president power with the parliamentary power, as we have know the 42nd constituent amendment bill, 70s में जो 42nd constituent amendment bill पास हुआ था, वो उसमें कहा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के जो रिकमेंडेशंस है, एडवाइस है, which should be binding on the president, which is given by the 42nd amendment bill, right। यहाँ पे जो सेंट्रल की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है वो प्रेसिडेंट को जो एडवाइस देती है, प्रेसिडेंट उसको क्या करता है, वो विथहोल्ड करते हैं उस एडवाइस को या असेंट दे देते हैं, राइट। बट अगेन द थर्ड पावर गिवन टू द प्रेसिडेंट इज दैट टू सेंड इट फॉर द रिकंसिडरेशन, ओके। बट आफ्टर द रिकंसिडरेशन बाय द पार्लियामेंट, अगर वो एडवाइस वापस आ गई तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट को उसको विद असेंट देनी ही पड़ती है। दिस इज गिवन बाय द अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट। 42nd जो कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट हुआ था उसके अंडर प्रेसिडेंट पे ये लिमिटेशन डाला गया है, बट दिस लिमिटेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू द गवर्नर। मतलब वो रिकंसिडरेशन के लिए जब एडवाइस भेज देगा, वो वापस आ जाएगी एडवाइस, तो गवर्नर स्टिल कैन सेंड फॉर रिकंसिडरेशन। अगेन वो रिकंसिडरेशन को सेंड कर सकता है। मतलब अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर्स की बात करें तो यहाँ पे गवर्नर की पावर बहुत ज्यादा हो जाती है, while the president power has been limited by the 42nd constituent amendment, right? So this is most important legislative powers। legislative powers के जो differences है वो हम next slide में और भी discuss करेंगे, right? Again the legislative power is given by the ordinance making power under the article
213 की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो दी गई है गवर्नर को एज पैरेलल विद द प्रेसिडेंट को भी ऑर्डिनेंस की पावर दी गई है, वैसे ही ऑर्डिनेंस की पावर है वो गवर्नर को दी गई है अंडर आर्टिकल 213. So this is most important legislative powers which is given to the institution of governor as we compare with the president के साथ compare करेंगे इस power का in the next slide. Okay, so there are some powers like financial powers on function में we are discussing the institution of president. So there are some financial powers also and some judicial powers also. In the financial power, it is the responsibility of governor to lay before the house the annual financial statement. जो स्टेट का जो बजट है, स्टेट बजट, वो प्रेसिडेंट, वो गवर्नर पुट फॉरवर्ड करता है हाउस को. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर, फाइनेंशियल पावर गवर्नर को दी गई है. दैट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रेजेंटेड टू द हाउस बाय द गवर्नर. अगेन सेम, जो प्रेसिडेंट जो वही करते हैं, जो सेंट्रल का जो बजट है वो पार्लियामेंट के सामने कौन प्रेजेंट करता है, दैट इज द प्रेसिडेंट. अगेन द स्टेट असेंबली के पास गवर्नर है, वो स्टेट के बजट को ले डाउन करते हैं. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द फाइनेंशियल पावर. राइट, अगेन जो मनी बिल्स रिलेटेड पावर है वो भी फाइनेंशियल पावर्स में आ जाती है. तो मनी बिल्स रिक्वायर्ड प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर. जब कोई मनी बिल आपको इंट्रोड्यूस करना है स्टेट असेंबली में, तो उसके लिए गवर्नर का प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पावर गिवन टू द गवर्नर, लाइक सेम एज द प्रेसिडेंट की भी रिकमेंडेशंस, प्रायर रिकमेंडेशंस चाहिए होती है इफ यू आर प्रेजेंटिंग द मनी बिल्स इन द सेंट्रल असेंबली. ओके, सो उसी के आधार पे, उसी के कोलैटरल पे गवर्नर हैज आल्सो गिवन द पावर to give the prior recommendation while introducing the money bill in the state assembly. Right, so वो भी हो financial powers के अंडर आती है. Again the third most important financial power is given is that the contingency fund which is held by the governor. Contingency fund is a collateral based fund है जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया है. एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, सो कुछ भी अगर नेसेसरी फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी तो कंटीजेंसी फंड से उसको पैसा ड्रॉ कर सकते हैं. सो उसकी जो अथॉरिटी है विच इज कंटीजेंसी फंड की अथॉरिटी इज गिवन टू द गवर्नर. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पावर विच इज गिवन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू द गवर्नर्स ऑफिस. राइट, सो ये फाइनेंशियल पावर्स हो गई. बजट का जो इंट्रोडक्शन है उसके लिए गवर्नर ही बजट को इंट्रोड्यूस कर देगा. अगेन जो मनी बिल्स है, मनी बिल्स अगर स्टेट को स्टेट असेंबली में इंट्रोड्यूस करना है तो ऑब्वियसली उसके लिए गवर्नर के प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए. अगेन जो कंटीजेंसी फंड है वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाया गया, तो उसकी पूरी अथॉरिटी जो है वो गवर्नर को दी गई है. So this is most important financial powers given to the governor by the constitution, right? So we will discuss the judicial powers. What is the judicial powers which is given to the governors? Governor को कौन सी judicial powers दी गई है? The first judicial power which is given to the president is to pardon or to reprieve or to remit or to respite given to the judicial award. कोई भी सेंटेंस अगर जुडिशरी ने दी है तो उसको वो पार्डन कर सकते हैं,
उसको वो रिप्राइव कर सकते हैं, उसको वो रिमिट कर सकते हैं, उसको वो रेस्पाइट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस पावर इज गिवन टू द गवर्नर अंडर आर्टिकल 161, राइट। ओके, तो पार्डन क्या होता है? पार्डन इज टू रिमूव द पर्टिकुलर सेंटेंस जो जुडिशरी ने दी है उसको कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं पार्डनिंग में। अगेन इफ यू कंसिडर द रिप्राइव में क्या होता है कि वो जो सेंटेंस दी है जुडिशरी पे उसमें स्टे लग जाता है। अगेन इफ यू से द कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस मीन्स जो सेंटेंस दी है उसके जो नेचर है वो चेंज हो जाती है। मतलब अगर आपको डेथ सेंटेंस मिल जाए, अगर आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल जाए तो उसको ही चेंज कर जाती है। मतलब डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजन में चेंज कर देता है कम्यूटेशन की पावर, राइट। ओके, अगेन द रिमिट पावर ऑफ रिमिशन क्या देती है कि लेसर सेंटेंस अवॉइड करना। मतलब जो डेथ की सेंटेंस है उसको लाइफ इम्प्रिजन में चेंज कर देना, ये रिमिशन पे होता है। और जो ड्यूरेशन है सेंटेंस का वो भी कम कर देता है अंडर द रिमिट। ये इंपॉर्टेंट है, पार्डनिंग पावर, रिप्राइविंग पावर, कम्यूटेशन पावर। व्हाई? बिकॉज गवर्नर इज कंसिडर्ड as a head of the state. Okay, so this power came from the British Parliament to remove any injustice happen through the judicial procedure. So judicial procedure में कोई अगर injustice हुआ हो तो final authority in the British is king or queen. उसके ही सेम कोलैटरल पे वी हैव फाइनल अथॉरिटी एट द सेंटर इज प्रेसिडेंट एंड फाइनल अथॉरिटी एट द स्टेट लेवल इज गवर्नर। गवर्नर इज कंसिडर्ड एज अ सुप्रीम हेड ऑफ जस्टिस मेकिंग पावर। सुप्रीम जस्टिस मेकिंग पावर जो गवर्नर को दी गई है उसके हिसाब से ये पावर्स है, जो पार्डनिंग पावर है, रिमिशन पावर है, रिप्राइविंग पावर है या कम्यूटेशन की जो पावर है वो गवर्नर को दी गई है। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग द जुडिशियल पावर ऑफ गवर्नर, राइट। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना मुझे। ओके, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द कंपैरिजन ऑफ, इफ यू सी द कंपैरिजन ऑफ, एज वी हैव ऑल नो द सेंटर में जैसे प्रेसिडेंट रहते हैं, सेंटर वी हैव अ प्रेसिडेंट एट द सेम लेवल, स्टेट पे गवर्नर रहते हैं। ओके, सो सेंटर की जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है एंड गवर्नर की जो स्टेट की पोस्ट है विच इज अ कोलैटरल, और उस पर कुछ सिमिलैरिटीज है एज वी हैव सीन ऑल सिमिलैरिटी, जैसे कि पैडोनिंग पावर की जो सिमिलैरिटीज है, जो बिल की जो एसेंट है उसकी सिमिलैरिटीज है, देन अगेन द ऑर्डिनेंस मेकिंग जो पावर है वो भी सिमिलर जाती है। सो दीज आर सम सिमिलैरिटीज बट देर आर सम डिफरेंसेस। जैसे कि प्रेसिडेंट की कुछ पावर है, अब अगर गवर्नर की पावर की कंपेयर करें, सॉरी, प्रेसिडेंट की जो पावर है उसको गवर्नर की पावर के साथ जब अब कंपेयर करें तो देर आर सम सिमिलैरिटीज as well as the difference. So we will discuss what is the similarities and what is the difference between powers of president and governor, right? So if we compare the ordinary bill passing, law making की जो power है, legislative power है, वो अगर हम compare करें तो if you say the president, as we have seen, the president can give assent or withhold assent or can send it to the reconsideration. अगर कोई भी बिल पास किया हो सेंट्रल के असेंबली, सेंट्रल पार्लियामेंट में, वो प्रेसिडेंट के पास जाता हो तो प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट इज हैविंग 3 ऑप्शंस, राइट। फर्स्ट इज टू गिव द assent to that particular bill. Again, president can
withhold the assent to that particular bill. Again, the third option is that president can send back that particular bill for a reconsideration. Okay, so this is the three options which president have. Again, if you compare with this governor, so गवर्नर के पास चार ऑप्शंस रहते हैं. The first option is that he can give the assent to that particular bill. Okay, जो स्टेट असेंबली ने बिल पास किया हो वो फाइनल असेंट के लिए गवर्नर के पास जाता है. उनके फाइनल असेंट के बाद ही वो बिल लॉ में कन्वर्ट होता है. तो गवर्नर हैज four options. First is to give the assent, second is to withhold that assent, and third is to send it for a reconsideration, and he has a fourth option, that is to reserve it for presidential assent. So this is most important power difference between the governor and the president. ऑर्डिनरी बिल होगा तो प्रेसिडेंट के पास तीन ऑप्शंस रहेंगे, ऑर्डिनरी बिल होगा तो गवर्नर के पास चार ऑप्शंस रहेंगे. So this is most important thing, right? Again, if you, as we have discussed earlier, 42nd constituent amendment ने क्या कहा कि अगर रिकंसिडरेशन के बाद वो बिल फिर से प्रेसिडेंट के पास आ गया, so president has to give its assent to that particular bill. Okay, so this is the limitation placed by the 42nd constituent amendment on the presidential power, right? But we don't find any parallel limitation on the governor's power here. So this is a major discretion given to the governor under the constituent scheme. ये important difference है प्रेसिडेंट के बिल पासिंग में और गवर्नर के बिल पासिंग में. गवर्नर के पास चार ऑप्शंस रहते हैं. जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि वो रिजर्व कर सकते हैं वो पर्टिकुलर बिल फॉर द प्रेसिडेंशियल असेंट. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? अगर हम मनी बिल की बात करें तो सेम है. प्रेसिडेंट के पास he cannot send it for the reconsideration. अगर मनी बिल आप प्रेसिडेंट के पास आ गया, either he will give to the assent or withhold the assent, but he cannot send that particular money bill to the reconsideration. Again, if you compare this power with the governor, first he can give the assent, he can withhold the assent, or third he can reserve that bill for presidential consideration. So this is most important difference if you are compare the power of governor with the power of president while passing of ordinary bills and while passing of money bills. Okay, so you can ask me directly what you have any confusion regarding our explanation of this particular topics, right? Okay, then we will discuss the power difference in the ordinance making. Ordinance making power is the most important power if there is a need of immediate action to make a law, while the parliamentary assemblies while they are in a recess, so this power has given to the president as a chief executive head of the state. Same, this ordinance making power is also given to the governor, right? Okay, so governor के पास भी ordinance making power है and president के पास भी ordinance making power है, which is came under the article 123, and governor की जो ordinance making power है which came under the article 213. Okay, so this is most important, like president ordinance pass कर सकते हैं while पार्लियामेंट्री असेंबलीज आर इन रिसेस, और पार्लियामेंट्री असेंबली एग्जिस्टेंट नहीं होती उस टाइम पे वो लॉ बनाने के लिए ऑर्डिनेंस की पावर का यूज कर सकते हैं. लेकिन जब गवर्नर की यहाँ पर ऑर्डिनेंस मेकिंग की पावर की बात करें, सो ही कैन मेक द ऑर्डिनेंस विच स्टेट हैज अथॉरिटी टू मेक लॉ, राइट?
स्टेट असेंबली की जो अथॉरिटी है लॉ बनाने की, जो सब्जेक्ट दिए गए हैं अंडर द 7th शेड्यूल, उसके हिसाब से गवर्नर भी ऑर्डिनेंस बना सकता है, बट ही रिक्वायर्स सम गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम प्रेसिडेंट while making the ordinance in certain situation. कुछ situations ऐसे होते हैं while making ordinance by the governors he requires to take a permission or to take a instructions from the president. president के instructions की governor को जरूरी होती है while making the ordinance. अगर हम president की बात करें तो उनके पास उन्हें कोई instructions की जरूरी नहीं होती. he is a suo motu, he can use its suo motu power टू मेक दैट ऑर्डिनेंस, राइट. वो लॉज बनाने के लिए उनको कोई इंस्ट्रक्शन की जरूरी नहीं होती, लेकिन गवर्नर्स को कुछ सर्कमस्टांसेस में इस इंस्ट्रक्शंस की जरूरी होती है. द इंस्ट्रक्शंस विल बी गिवन बाय द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट कब कब इंस्ट्रक्शंस देते हैं? द फर्स्ट व्हेन कुछ जो स्टेट असेंबलीज के बिल्स हो वो प्रेसिडेंट्स के लिए रिजर्व, द बिल्स विच वुड हैव बीन रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंशियल असेंट. प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के कुछ बिल्स को वो गवर्नर रिजर्व करना चाहते थे, उस बिल पे ऑर्डिनेंस बनाने के लिए गवर्नर को प्रेसिडेंट की इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट. जो बिल्स हमने ये देखा कि अंडर आर्टिकल 200 के 5 कुछ बिल्स है वो प्रेसिडेंट के लिए, एसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं गवर्नर. तो उसी बिल्स पे ऑर्डिनेंस बनाने के लिए गवर्नर को इंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट से. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगेन प्रेसिडेंशियल असेंट, प्रीवियस सैंक्शंस. कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जिनके लिए प्रीवियस सैंक्शंस लेना बहुत जरूरी है, लाइक जैसे कि स्टेट के जो बिल्स जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के खिलाफ है या कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के खिलाफ है, उनको प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए रिजर्व रखना बहुत जरूरी हो जाता है. तो उसके लिए उस पे ऑर्डिनेंस बनाने के लिए भी प्रेसिडेंशियल इंस्ट्रक्शंस गवर्नर्स को लेने चाहिए. सो दीज आर द सम कंडीशंस अंडर विच गवर्नर शुड टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इस टाइम पे इंस्ट्रक्शंस दे देता है गवर्नर्स को. सो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है गवर्नर की, वो लिमिटेड पावर है, while the presidential power of ordinance making is a wide power. बहुत वाइड पावर है, राइट. लेकिन जो ऑर्डिनेंस मेकिंग गवर्नर की पावर है वो लिमिटेड पावर है. वाई? बिकॉज इन सर्टन सर्कमस्टांसेस गवर्नर शुड गो फॉर द प्रेसिडेंशियल इंस्ट्रक्शंस व्हाइल मेकिंग दैट पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस. जैसे कि जो बिल्स होते हैं जिनको वो गवर्नर प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए रिजर्व करते हैं, उन पे जो ऑर्डिनेंस बनाने के लिए गवर्नर को प्रेसिडेंट की इंस्ट्रक्शन लेना बहुत जरूरी होता है. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज we will see how the presidential pardoning power it's different from the governor's pardoning power. Again, what we have discussed is that president is considered as a central head of justice. president को एक जस्टिस के हेड माने जाते हैं स्टेट नेशन में. उसी प्रकार से गवर्नर इज कंसिडर्ड एज अ सुप्रीम हेड ऑफ जस्टिस. जस्टिस के लिए हेड माने जाते हैं. तो एक फाइनल अथॉरिटी दी गई है इन दोनों के पास, द फाइनल अथॉरिटी टू मेक अ जस्टिस. ओके, तो उसके हिसाब से उनके पास पार्डोनिंग पावर दी गई है. इफ यू कंपेयर द पार्डोनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट हैज अ वाइड पार्डोनिंग पावर. फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज दैट president can pardon the death sentence. So pardoning death sentence power is not given to the governor.
but governor can commute the death sentence, governor can give the respite from the death sentence, or governor can give the reprieve from the death sentence. Okay, but governor cannot pardon the death sentence. The pardoning power of death sentence is only given to the president. So this is most important difference between pardoning power of governor and pardoning power of president. Again, the wider use of pardoning power to the president, it came under the military code. Military code के जो jurisdiction है, as president is a head of our military, जो एयर फोर्स है, फिर मिलिट्री है और नेवी है, उनके जो हेड है, सुप्रीम कमांडर है, कौन है? प्रेसिडेंट. तो उसके हिसाब से उनको जो मिलिट्री कोड के जो अवार्ड है उसकी पावर दी गई है प्रेसिडेंट को. सो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट गिवन एनी मिलिट्री कोड रिलेटेड पावर, पैडोनिंग पावर टू द गवर्नर, बट मिलिट्री कोड रिलेटेड जो पैडोनिंग पावर है that is only given to the president. Why? Because he is considered as a supreme commander of our three forces, right? So governor तो supreme commander है नहीं, तो उसके लिए पैडोनिंग पावर सिर्फ प्रेसिडेंट को दी गई है. So this is most important differences between the institution of governor and the institution of president. Okay, so as we have seen, it is the controversial nature of governor as a institution. गवर्नर इंस्टीट्यूशन को कंट्रोवर्शियल क्यों कहा जाता है? द फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई? बिकॉज इट एक्ट एज अ एजेंट ऑफ सेंटर. सेंटर के एजेंट जैसे वो बर्ताव करते हैं. जैसे कि हमने रिसेंटली देखा होगा, जैसे कि इन केस ऑफ महाराष्ट्र, द गवर्नर इज एक्सटेंडिंग इट्स पावर as a nominal head right. Again, Karnataka, governor is using its power in bipartisan manner, so it's acting as a agent of center. Again, why this is controversial? Because constitutional drawbacks. There are constitutional drawbacks within the institution of governor. Institution of governor. Why? Because due to the appointment. Appointment क्या है? Appointment is a central nominee, while the terms of condition or tenure is not fixed, right? So what earlier has done, suppose take an example, जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के बाद जो जनता गवर्नमेंट आया था, what जनता गवर्नमेंट has did in 1978 is that he removed all governors appointed by the earlier इंदिरा गांधी गवर्नमेंट. इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने जो गवर्नर्स अपॉइंट किए थे तो उनको रिमूव कर दिया और खुद के नॉमिनीज वहां पे बिठाए गए. तो सेम एक कन्वेंशन बन गया कि जैसे ही नया गवर्नमेंट आता है, द न्यू गवर्नमेंट केम एट द सेंटर, दे विल रिमूव द अर्लियर governors and make its own appointment. उनके खुद के पार्टी वर्कर्स है वो गवर्नर के तौर पे बिठा देते हैं, राइट? सो दिस ऑफिस इज बिकेम अ वेरी कंट्रोवर्शियल बन जाता है ये ऑफिस. ओके, सो हाउ द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल प्रोसेस. आर्टिकल 153 के अंदर जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस दी गई है ना, आर्टिकल 154, 155 में जो रिमूवल प्रोसेस दी गई है, सो दिस इज अ वेरी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रॉबैक.
कॉन्स्टिट्यूशनल एक ड्रॉबैक बन चुका है इस गवर्नर की पोस्ट पे. So they acts as an agent of center. Why? Because the lack of proper independence. इस पोस्ट को कोई इंडिपेंडेंस ही नहीं है, जैसे कि ना अपॉइंटमेंट प्रोसीजर उसकी इंडिपेंडेंट है, ना कि रिमूवल प्रोसीजर उसकी इंडिपेंडेंट है, ना सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर यहाँ पे दे गया है. सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, देयर इज नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर to the governor process. So this controversy has generated lot of political appointments. कोई भी न्यू गवर्नमेंट आ जाता है सेंटर पे तो दे रिमूव दैट पर्टिकुलर गवर्नर्स अपॉइंटेड बाय द अर्लियर गवर्नमेंट. अर्लियर जो पहले वाले गवर्नमेंट ने जो गवर्नर्स अपॉइंट किए थे उनको वो रिमूव कर देता है और अपने खुद के नॉमिनेशन वहां पे बिठा देता है टू कंट्रोल दैट पर्टिकुलर स्टेट. अगर कोई अपोजिशन की स्टेट होती है सो ऑब्वियसली देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री. काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री एंड गवर्नर के पास वो फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाते हैं. तो ऑब्वियसली ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है गवर्नर को दिया गया वही सेंट्रलाइजिंग है. बट इन द केस ऑफ बीपी सिंगल, एक बीपी सिंगल केस हुआ था in 2010 where court has stated that the separate ideology or different ideology cannot be the sole reason to remove government. पहले क्या करते थे in 1978 में भी they have given some reason that the why we are removing that particular governors because they have a different ideology from the present government, right? अर्लियर गवर्नमेंट की जैसे कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई और जैसे कि बाद में बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई तो बीजेपी गवर्नमेंट व्हाट दे विल टेल टू द कोर्ट दैट द अर्लियर कांग्रेस अपॉइंटीज आर नॉट आइडियोलॉजिकली सिमिलर with our government, so that's why we are removing that particular government. But in the case of BP single case ने court ने क्या कहा कि you cannot remove that particular person from the post of government simply because he has a separate or different ideology. So एक important limitations डाल दिया है in BP single case ने. And the next limitations it has placed is that the removal of government जो गवर्नर का रिमूवल होता है वो कोर्ट में आप उसके खिलाफ जा सकते हैं. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट गिवन बाय द बीपी सिंगल केस में एक इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है कि जब ये गवर्नर्स डिस्क्रिमिनेशनली या आर्बिट्ररीली रिमूव होंगे, you cannot remove the governors in the arbitrary manner and you can appeal. Okay, so ये important case है. You have to mention that particular cases while you are answering the particular question regarding the governor के removal के खिलाफ जब question आ जाता है तो you have to mention this case, that is the BP single case in 2012 ने कोर्ट में अपील कर सकते हो while we are removing. एंड जो रिमूवल होगा वो आर्बिट्ररीली नहीं होना चाहिए. और कुछ गवर्नर्स है जो सेपरेट आइडियोलॉजी रखते हैं, सिर्फ उसकी वजह से आप गवर्नर्स को रिमूव नहीं कर सकते. ये कोर्ट ने इस केस में कहा था, राइट? सो इश्यूज, व्हाट आर द इश्यूज रिगार्डिंग द डिस्क्रिशनरी पावर? डिस्क्रिशनरी पावर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर. Constitution only has given the power. If we compare the president don't have a constitutional discretionary power. President only has a situational discretionary power. Discretionary power means
he can use his own mind. Don't want to be advised. एज अ रूल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का रूल क्या कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगी और उस एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट एक्ट करना चाहिए। तो नॉमिनल हेड ये जो होते हैं प्रेसिडेंट, व्हाई? बिकॉज इट दे एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मिनिस्ट्री, दे कैनॉट यूज देयर own mind, only they are acting on the advice of council of ministry, right? So president has to act on the advice of council of ministry. He doesn't have any constitutional discretionary power, he only have the situational discretionary power। मतलब कोई भी अपॉइंट करना हो, जैसे कि पीएम को अपॉइंट करना हो, कोalition पॉलिटिक्स, मतलब किसको मेजॉरिटी नहीं मिली हो कोई पार्टी को तो पीएम को अपॉइंट करना हो, तो दिस गिव सम डिस्क्रिशनरी पावर विच इज अ सिचुएशनल, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल। बट अगेन द गवर्नर हैव बोथ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर एज वेल एज द सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर। मतलब कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल में ही कुछ रिकमेंडेशन है, जैसे कि आर्टिकल 200 व्हाट इट टेल्स दैट इट कैन रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन। सो दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर। कौन सा बिल को रिजर्व करना है, दैट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नर ओनली, राइट? सो ही हैज टू बी एक्ट ऑन इट्स ओन माइंड, नॉट ऑन द गवर्नर के ऑफिस से, which also came under the discretionary power given to the governor। कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है गवर्नर को, वो यहाँ पे हमें पता चल जाते हैं, जैसे कि आर्टिकल 200 एंड आर्टिकल 356 जैसे आर्टिकल्स में। अगेन द सिचुएशनल डिस्क्रिशन केम फ्रॉम द स्टेट व्हेन देयर इज अ नो मेजॉरिटी एंड वी हैव टू फॉर्म द गवर्नमेंट। किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल रही है तो ऑब्वियसली दे विल गिव द सिचुएशनल डिस्क्रिशन, मतलब गवर्नर पे डिसाइड हो जाता है कि किसको इनवाइट करना है। as we have seen, very controversial, because we have seen that in the Goa governor has invited the बीजेपी को गवर्नर ने इनवाइट किया, बट कांग्रेस हैज द लार्जेस्ट सीट्स। कांग्रेस के पास मैक्सिमम लार्ज, जैसे कि फर्स्ट सीट्स होते हुए भी गोवा के गवर्नर ने बीजेपी को इनवाइट किया था गवर्नर फॉर्मेशन में। सो दिस इज द सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर, और सम पावर्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली डिस्क्रिशनरी पावर। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर्स। सो डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर इज मोर वाइडर, बहुत वाइडर पावर्स दी गई है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। वाई द ऑफिस ऑफ गवर्नर के ऑफिस को कैसे कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है। तो द डिस्क्रिशनरी पावर आल्सो प्लेड द इम्पॉर्टेंट रोल। जैसे कि हमने सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर, जैसे कि हमने गोवा में देखा, गोवा में क्या हुआ था कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट्स मिले थे, बीजेपी को सेकंड नंबर पे सीट मिले थे। द कन्वेंशन इज दैट गवर्नर हैज टू कॉल द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, राइट? जिनको ज्यादा नंबर के सीट मिले हैं उनको ही गवर्नर को बुलाना चाहिए था गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए, बट द गोवा गवर्नर हैज ऑप्टेड फॉर द बीजेपी एंड इनवाइटेड द बीजेपी पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। सो ये जो situational discretionary power है which has been used by the governor in the bipartisan manner में उसका यूज किया था। so that due to that the office of governor has become a very controversial in nature। so these are the main issues related to the office of governor। जैसे कि हमने अपॉइंटमेंट की प्रोसेस जैसे देखी, रिमूवल की प्रोसेस देखी, these are the issues which has to be rectified, right? Again, why this controversy regarding the
गवर्नर के ऑफिस के साथ ही कंट्रोवर्सी क्यों जुड़ी हुई है, उसको हमने देखा कि कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है और जो लिमिटेशंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस है, उसके हिसाब से ये कंट्रोवर्सी इमर्ज हो रही है। ओके, सो देर आर सम रिकमेंडेशंस बाय द, जैसे कि सेंटर और स्टेट की जो ये है, सेंटर एंड स्टेट कमीशन, जैसे कि पुंछी कमीशन विच इज गिवन अंडर द 2010 में उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दिए हैं, द कमीशन विच इज फॉर्म for the center and state relation, it has given some recommendation is that introduce the impeachment process for the removal of governor. जो प्रेसिडेंशियल इम्पीचमेंट प्रोसेस है पार्लियामेंट की, उसको भी आप स्टेट असेंबली द्वारा गवर्नर को इम्पीच कर सकते हो. दिस इज मेजर रिकमेंडेशन गिवन बाय द पुंछी कमीशन फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नर, राइट. सो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए कहा है. अगेन दे हैव गिवन इज दैट टू अमेंड द आर्टिकल 154 and 155 to make it parallel as the constitution. जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, जिसके हिसाब से वो जो लिमिटेशंस डाल दिए थे प्रेसिडेंट पे, उसी प्रकार के लिमिटेशंस पुंछी कमीशन हैज रिकमेंडेड टू गिव द सेम लिमिटेशंस ऑन द गवर्नर्स पावर. So this is two the major recommendations given by the Punchi Commission in 2010. 2010 में पुंछी कमीशन ने एक recommendations दिए थे, तो उसके हिसाब से they advised to go for the constitutional amendment of Article 354. Article 354 को भी amendment करने के लिए कहा है उन्होंने. Then Article 154, Article 4155 जो रिमूवल का प्रोसेस है उसको इम्पीचमेंट के तरफ से ले जाने के लिए कहा है पुंछी कमीशन ने, राइट. सो दीज आर द मेजर रिकमेंडेशंस गिवन बाय द पुंछी कमीशन फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर. ऑफिस ऑफ गवर्नर को जो रेक्टिफाई करने के लिए ये मेजर रिकमेंडेशंस दी गई है बाय द पुंछी कमीशन. ओके, इफ यू क्वेश्चन केम रिगार्डिंग द गवर्नर्स, रोल ऑफ गवर्नर्स, कंट्रोवर्शियल नेचर ऑफ गवर्नर्स, गवर्नर के ऑफिस पे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो व्हाट वी शुड राइट इज द केसेस रिलेटेड टू ऑफिस ऑफ गवर्नर. देन अगेन व्हाट आर द रिकमेंडेशंस गिवन बाय द कमीशंस, जैसे कि पुंछी कमीशंस ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए हैं. एंड व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रॉबैक्स, कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ ड्रॉबैक्स हैं गवर्नर के ऑफिस के रिलेटेड, सो उसको हमें मेंशन करना चाहिए. या जुडिशियल केसेस, देन द कमीशंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रॉबैक्स. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट विल कंक्लूड आवर टुडेज लेक्चर रिगार्डिंग द गवर्नर. सो नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द स्टेट रिलेटेड, पार्लियामेंट की, स्टेट की जो पार्लियामेंट है, स्टेट की जो असेंबली है या स्टेट के जो कुछ काउंसिल है, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. इफ यू वांट टू गेट द सब्सक्रिप्शन फॉर द अनअकैडमी, प्लीज यूज माय रेफरल कोड, दैट इज Aniket